Good morning. In yesterday's class, we discussed about C3 cycle. The cycle is called C3 because the first stable product of the cycle is a 3-carbon compound, that is phosphoglyceric acid. In C3 cycle, we discussed the 3 steps, that is carboxylation, right? That is carbon dioxide fixation, reduction and regeneration. And this C3 cycle actually takes place in the mesophyll cells. Now you must be confused that I told you that it is taking place in the stroma. Now I am saying it takes place in the mesophyll cells. So I want to tell you that we have chloroplast, cytoplasm of the chloroplast is called as stroma, right? C3 cycle जो है आपका, that is a dark reaction, light independent reaction in which we are using ATP and NADPH to form glucose. So this cycle or the dark reaction is taking place in the stroma, that is cytoplasm of the chloroplast. But this chloroplast is located in the mesophyll cells. Mesophyll cells are present in leaf. If you look at a leaf, तो उसके ऊपर एक thin सी layer होती है in which small tightly packed cells are present. Okay, that is a very thin layer of the cells, and this very thin layer of cell which forms the upper layer of the leaf, that is called as epidermis. You might have seen this layer on the onion as well. अगर अनियन को काटो तो उसके ऊपर एक थिन सी वाइट कलर की ट्रांसपेरेंट सी लेयर निकलती है. इट्स वेरी थिन, दैट इज एपिडर्मिस. सिमिलरली इफ यू ब्रेक डाउन अ लीफ, तो लीफ को जब आप तोड़ोगे तो उसके ऊपर से भी एक पतली सी थिन सी ट्रांसपेरेंट सी लेयर निकलेगी, दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस. एंड जस्ट बिलो द एपिडर्मिस वी हैव mesophyll cells. And these mesophyll cells contain chloroplast. Okay, तो आपका जो C3 cycle है, that is taking place in the mesophyll cells in the stroma of the chloroplast. And yesterday we discussed about the enzyme Rubisco as well. Okay, the first step in the C3 cycle was the carboxylation, or we can say addition of carbon dioxide to a 5-carbon compound RUBP, that is ribulose 1,5-bisphosphate. This addition of carbon dioxide to this 5-carbon compound is catalyzed by enzyme Rubisco, ribulose, bisphosphate, carboxylase, oxygenase. अब इसको हम कार्बोक्सिलेज भी बोलते हैं और इसको हम ऑक्सीजनेज भी बोलते हैं, क्योंकि इसके पास दोनों एक्टिविटीज़ हैं. इट कैन ऐड कार्बन डाइऑक्साइड टू RUBP एंड इट कैन ऑल्सो ऐड ऑक्सीजन टू द RUBP. बट ये कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेगी या ऑक्सीजन ऐड करेगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. If carbon dioxide is present in high concentration as compared to the oxygen, then Rubisco will bind with carbon dioxide and it will result in carboxylation. And even if carbon dioxide and oxygen are present in the same concentration, then also Rubisco will bind with carbon dioxide and it will result in carboxylation. This is because Rubisco has more affinity for the carbon dioxide. So it will bind with carbon dioxide even if carbon dioxide and oxygen are present in the same concentration.
Now what happens if the concentration of oxygen is more than the carbon dioxide? Then it will result into a process which is called as photorespiration. Photorespiration. So today we will discuss about this process. Although it is not given in your textbook, but we are going to discuss this topic because there are several questions in your textbook which are related to this topic. So we need to discuss it. So let's start with the photorespiration. Now what happens in photorespiration? It is actually a wasteful process. Okay, it is a highly wasteful process. Now why it is called as wasteful process? Because it results in the wastage of carbon dioxide that has been fixed by C3 cycle. ठीक है, C3 साइकिल में हमने क्या देखा कि जो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम यूज़ कर रहे हैं ग्लूकोज बनाने के लिए. सो ये कार्बन डाइऑक्साइड इज़ बीइंग फिक्स्ड. बट फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या करेगा? C3 साइकिल जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहा है, यूज़ कर रहा है, ये उसी कार्बन डाइऑक्साइड को वेस्ट करेगा. एंड ये प्रोसेस कब होगा? जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन से ज़्यादा होगी. अब ये कैसे होगा? हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन विल इंक्रीज. सो लेट्स कंसीडर अ लीफ. इनसाइड द लीफ mesophyll cells are there, right? Okay, so we have mesophyll cell. The outermost layer of the leaf is epidermis. Which contains very tightly packed small cells, right? And here we have inside the mesophyll chloroplast. Right? क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा है, साइटोप्लाज्म, ये थैलाक्वाइड्स हैं, ग्रैनम्स हैं. और ये जो डॉटेड एरिया है दैट इज द साइटोप्लाज्म, दैट इज द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. तो स्ट्रोमा के अंदर क्या चल रहा है? C3 साइकिल चल रहा है. एंड C3 साइकिल से आपका ग्लूकोज बन रहा है, C6H12O6, राइट? एपिडर्मिस लेयर जो होती है, द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द लीफ, दैट कंटेन्स स्टोमेटा. दैट इज एक्चुअली किडनी शेप्ड सेल. Okay, these kidney shaped cells are guard cells, and this space which is enclosed by the guard cell, that is called as stomatal pore. अब स्टोमेटल पोर का फंक्शन क्या है? एक तो ये ट्रांसपीरेशन में हेल्प करेगा. ट्रांसपीरेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर बाय द प्लांट. ओके, तो वाटर जो है वो प्लांट से कैसे एग्जिट करेगा? थ्रू दी स्टोमेटल पोर. एंड सेकेंड फंक्शन जो आपका स्टोमेटल पोर जिसमें हेल्प करेगा, दैट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. सो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यू नो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस. Carbon dioxide comes in and oxygen goes out. Okay, it will go out through the stomatal pore.
तो ऑक्सीजन जो है वो बाहर जाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है अंदर एंटर करेगा. सो दिस स्टोमेटल पोर इज हेल्पिंग इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. नाउ व्हाट हैपन्स व्हेन द टेम्परेचर इज वेरी हाई. Okay, temperature is very high, then stomatal pore will close, and it usually happens in the plants which are living in the equator region, okay, where the temperature is very high. तो जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाएगा. स्टोमेटल पोर क्यों क्लोज होगा? In order to conserve the water, because I told you stomatal pore is playing two important functions. One is transpiration, that is loss of water from the plant, and second is exchange of gases, right? अब हमें ट्रांसपीरेशन को रोकना है, क्योंकि टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो वाटर लॉस भी ज़्यादा होगा, और अगर वाटर लॉस ज़्यादा हुआ तो आपका प्लांट जो है वो डिहाइड्रेट हो जाएगा, राइट? तो हमें क्या करना है, हमें स्टोमेटल पोर को क्लोज करना है सो दैट वाटर लॉस कम हो जाए और प्लांट डिहाइड्रेट ना हो. सो व्हेन द टेम्परेचर इज वेरी हाई इट विल रिजल्ट इन द क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स. तो जब स्टोमेटल पोर्स आपके बंद हो गए तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आनी बंद हो जाएगी. अब कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री नहीं हो रही, बट जो कार्बन डाइऑक्साइड पहले से अंदर गई हुई है उससे तो फोटोसिंथेसिस चल रही होगी, लाइट रिएक्शन चल रहा होगा, राइट? और अंदर ऑक्सीजन भी रिलीज हो रही होगी, बट कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ पा रही और ऑक्सीजन अंदर बनती जा रही है. ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड पहले से अंदर गई हुई थी उससे फोटोसिंथेसिस होती जा रही है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती जा रही है. बट वो जो ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है इट कैन नॉट एग्जिट दी लीफ, क्योंकि स्टोमेटल पोर जो है दैट इज नाउ क्लोज्ड. सो ऑक्सीजन विल नॉट बी एबल टू एग्जिट. तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ नहीं रही और अंदर जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो एग्जिट नहीं हो पा रही. सो दैट विल लीड टू दिस सिचुएशन जहाँ पे ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है दैट बिकम्स हाई एज कंपेयर टू द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो नाउ व्हाट विल हैपन, एंजाइम रुबिस्को will bind with oxygen, so it will result in oxygenase activity of the enzyme rubisco. I told you enzyme rubisco has both the activities carboxylase as well as oxygenase. तो जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी रुबिस्को जो है that will act like oxygenase, and here photorespiration will start. Now we will study photorespiration in detail. Now photorespiration जो है that is actually considered a wasteful process. ठीक है, why? Because एक तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को वेस्ट कर रहा है, राइट? सेकेंडली यहाँ पे क्या हो रहा है, नो शुगर सिंथेसिस इज टेकिंग प्लेस. जैसे C3 साइकिल में तो ग्लूकोज बन रहा था ना, फोटो रेस्पिरेशन में कोई ग्लूकोज नहीं बनेगा, कोई शुगर नहीं बनेगी, राइट? नो ATP सिंथेसिस, तो आपको एनर्जी भी नहीं मिल रही, राइट? रादर इट रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद द यूटिलाइजेशन ऑफ ATP. तो ये ATP तो बना नहीं रहा, बट ये कार्बन डाइऑक्साइड को वेस्ट कर रहा है, उसको रिलीज कर रहा है प्लांट सेल से. और वो रिलीज कैसे कर रहा है, उसके लिए भी वो ATP यूज़ कर रहा है. तो आपको एनर्जी देने की बजाय, प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करने की बजाय वो प्लांट से ही एनर्जी यूज़ कर रहा है. तो एक तो प्लांट की एनर्जी वो यूज़ कर रहा है, दूसरा C3 साइकिल ने जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया था उसी कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिलीज़ कर रहा है. तो अगर हम नेट रिजल्ट देखें तो प्लांट को कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्लांट को लॉस ही हो रहा है, क्योंकि उसकी एनर्जी भी वेस्ट जा रही है, राइट? फोटो रेस्पिरेशन जो है दैट इज़ यूजिंग ATP, उसकी कार्बन डाइऑक्साइड भी वेस्ट जा रही है.
इट इज़ वेस्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड, और ना तो यहाँ पे कोई शुगर की सिंथेसिस हो रही है, राइट। तो शुगर की सिंथेसिस भी नहीं हो रही, एटीपी भी वेस्ट जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी वेस्ट जा रही है। सो नेट ये जो फोटो रेस्पिरेशन है, इट इज़ अ हाईली वेस्टफुल प्रोसेस। इससे प्लांट लॉस में ही जाएगा। देर आर सम प्लांट्स इन विच फोटो रेस्पिरेशन डजंट टेक प्लेस, ओके। उनको हम बोलते हैं C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स जो हैं, दे हैव सम स्पेशल adaptations in their body which avoids photorespiration that we will discuss in C4 cycle. C4 cycle जो है वो सिर्फ C4 प्लांट्स के अंदर होगा। और C4 प्लांट्स कौन से होते हैं? which have certain modifications and adaptations in their body to avoid photorespiration। ठीक है, तो वो C4 प्लांट्स हो गए जिनके अंदर फोटोरेस्पिरेशन नहीं होगी, उनके अंदर C4 साइकिल होगा। और C4 साइकिल जो है वो फोटो रेस्पिरेशन को रोकेगा, उसको अवॉइड करेगा। C3 साइकिल जो है आपका, दैट इज यूनिवर्सल। ये सभी प्लांट्स के अंदर होगा, वेदर वो आपके हिली एरियाज के प्लांट्स हैं, हाई टेम्परेचर रीजन के प्लांट्स हैं, या लो टेम्परेचर रीजन के प्लांट्स हैं, डजेंट मैटर। C3 साइकिल इज यूनिवर्सल, इट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन ऑल द प्लांट्स। वेयरएज C4 साइकिल जो है वो सिर्फ C4 प्लांट्स के अंदर ही होगा। और ऐसे प्लांट्स कौन से हैं जो आपके हाई टेम्परेचर एरिया में ग्रो करते हैं? दे हैव सर्टेन अडेप्टेशंस एंड मॉडिफिकेशंस इन देयर बॉडी विच विल अवॉइड द फोटो रेस्पिरेशन, ओके। एंड फोटो रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं C2 साइकिल, because first stable product which is formed in the photorespiration, that is your 2 carbon compound, okay. So let's finish photorespiration first. Photorespiration requires 3 organelles for its completion, and they are chloroplast, peroxisomes, and mitochondria. I have written the names of organelles in the sequence starting from chloroplast to the mitochondria. So photorespiration का जो process है, that will start from the chloroplast, then it will go to peroxisome, and it will end with the mitochondria, okay. So let's suppose this is the chloroplast. ये सारा रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है? लीफ के अंदर ही चल रही है, ओके। लीफ सेल्स होंगे, लीफ सेल्स के पास ये क्लोरोप्लास्ट भी होता है, पेरोक्सिसोम्स भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। सो यू हैव क्लोरोप्लास्ट हियर, राइट। क्लोरोप्लास्ट में क्या हुआ? ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ गई एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कैसे बढ़ी, क्योंकि हाई टेम्परेचर होने से स्टोमेटल पोर क्लोज हो गए, एंड ड्यू टू क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आनी बंद हो गई और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अंदर इंक्रीज होनी शुरू हो गई। सो व्हाट विल हैपन? RuBP विल कंबाइन विद ऑक्सीजन। RuBP हमने कल डिस्कस किया था, क्या है C3 साइकिल में। RuBP is a 5 carbon compound, okay. It contains 5 carbons and its full name is ribulose 1,5-bisphosphate. तो इसके पास 5 कार्बन्स हैं and 2 phosphates are there. 1 phosphate is attached to the first carbon and second phosphate is attached to the 5th carbon. So RuBP is ribulose 1,5-bisphosphate. So as oxygen is high as compared to carbon dioxide, oxygen will bind with RuBP and it will result in the formation of phosphoglycolate.
glycolate, which is a 2-carbon compound. This phosphoglycolate is then converted into glycolate, which is again a 2-carbon compound. Now you can see the first stable product of the cycle is 2-carbon compound, that is phosphoglycolate. So this is also called as C2 cycle. Now this glycolate, which is formed in the chloroplast, that will diffuse inside the peroxisome. So next, peroxisome comes into play. Peroxisome. The glycolate is going to diffuse here. So this glycolate comes here in the peroxisome, which is a 2-carbon compound. This glycolate will be converted into glycine by the addition of amino group NH2. Glycine is amino acid. It is formed by the amination reaction, that is addition of the amino group. And glycine is also a 2-carbon compound, right? Now this glycine, which is formed here in the peroxisome, it will diffuse inside the mitochondria. Now mitochondria comes into play. Okay, so here we have mitochondria. This glycine will come here, which is a 2-carbon compound. Now what if I say we have 2 molecules of glycine? 2 molecules of glycine means we have total 4 carbons, right? एक ग्लाइसिन में 2 कार्बन्स हैं, तो 2 ग्लाइसिन में 4 कार्बन्स हो गए. अब इसमें से एक मॉलिक्यूल आपका बन जाएगा सिरिन. सिरिन इज अ 3-कार्बन कंपाउंड. ठीक है, 4 कार्बन में से 3 कार्बन यूज हो गए सिरिन बनाने में. सिरिन इज ऑल्सो एमिनो एसिड. पीछे बचा 1 कार्बन. दैट कार्बन विल बी रिलीज्ड एज अ कार्बन डाइऑक्साइड. सो इसने कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया. जब स्टोमेटल पोर खुलेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट विल बी एलिमिनेटेड आउट फ्रॉम द प्लांट. सो इट मीन्स जो C3 साइकिल इतनी मेहनत करके कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके ग्लूकोज बना रहा था, फोटो रेस्पिरेशन उस कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसे रिलीज कर रहा है. अब आप बोलोगे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है इससे C3 साइकिल नहीं हो सकता. नो, बिकॉज C3 साइकिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है, राइट? बट ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज हो रहा है आके माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट जाएगा. सो दैट्स वाई फोटो रेस्पिरेशन जो है दैट इज कंसिडर्ड एज अ वेस्टफुल प्रोसेस, because the carbon dioxide which is being fixed by the C3 cycle or Kelvin cycle, that is being released by the photorespiration, and it is also using ATP for releasing this carbon dioxide. तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड भी वेस्ट कर रहा है, ऊपर से एनर्जी भी यूज कर रहा है. एनर्जी देनी तो नहीं है इसे, एनर्जी यूज ही कर रहा है उल्टा. सो दैट्स वाई प्लांट इज इन लॉस. सो दिस इज द फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस. In the next video, we will discuss about the C4 plants. तो C4 plants के अंदर C4 cycle होगा, which is also called as Hatch-Slack pathway. And C4 plants में special adaptations होती हैं, modifications होती हैं, which will avoid this wasteful process, that is photorespiration. Okay, so in the next class, first of all we will discuss about the adaptations to avoid photorespiration. Then we will start with the C4 cycle.